नमस्कार दोस्तों, I welcome you again on my channel The Pearl Innovations. Friends, 2021 आप सबके लिए हैप्पी हो, हेल्दी हो. I wish you all a very happy new year. I wish all my friends, all the viewers, all the family members and everybody a very happy new year. This video is about the design process. Design process is about how actually we execute the design. How to start with the design. We've been through the principles, objectives, elements, concept. Now the design process में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कब क्या चीज़ अप्लाई करें और डिज़ाइन को कैसे स्टार्ट करें. Look, when we get an object, when we get a particular project to be worked on, firstly we think about the concept. Then we get to know about the client's brief. Then we create our own brief. Now, once we are done with all that stuff, we know कि कौन से spaces required हैं उस particular project में. For example, a house, a residence, I guess, is the most simple, example जिसको समझना और समझाना is very easy. This video is going to help students a lot. Because you will be bombarded with so many ideas and so many simple tricks to how to start and how to work throughout the design. So once the requirement list is set, you know these spaces are to be designed. You have somewhere or else the idea of furniture placement and number of items which are to be put in a particular space. So somewhere or else you have an idea of that this area will be bigger than this area will be the smallest one and so on. So accordingly आपको कुछ बबल्स तैयार करने हैं. मैं अब समझाने वाली हूँ बबल डायग्राम के बारे में. बबल डायग्राम क्या होता है, उसमें आपको कुछ बबल्स तैयार करने हैं. नाउ फॉर दोज बबल्स आपको यूज़ करना है अपना क्रिएटिविटी, अपनी स्केच बुक्स, अपनी स्टेशनरी, कुछ कलरफुल पेन्स. यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू कैन बी बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू एस्थेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली. जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपकी प्रैक्टिकलिटी है, जो भी आपकी फिलॉसफी है, अब दिस इज द एक्चुअल टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करो. So you can have some very nice bubbles on your sheet. You may sketch them or you can use or cut some pastel sheets, colorful pastel sheets, and make some big and small bubbles depending on the areas. For example, a powder room is obviously the smallest space in a particular house. So the bubble that you will create for that powder room will be the smallest one. Drawing room, master bedroom, the living areas, these are the areas जिनका furniture requirement और जिसका circulation ज़्यादा होता है. तो it's very obvious कि उसका size जो bubble का है वो powder room से काफ़ी बड़ा रहेगा. So just with some kind of abstract idea of the spatial requirements, you have to cut those bubbles and on a plain sheet of paper you have to start organizing them. That where should the entry be, where should the lobby be, where my master bedroom will be, settled and so on. So you start, making a good composition while you cut your bubbles. You're not supposed to paste it at this stage. Pasting तब होगी once you are very sure that this is the final composition of my plan. So keep exercising those bubbles, keep shifting. If you think कि नहीं this is not coming at the right place, overlapping करनी है, coordination करना है, कुछ चीज़ें parallel रहेंगी, कुछ चीज़ें touch करेंगी, कुछ चीज़ें exactly opposite रहेंगी, तो you have to keep on changing the placement of bubbles, right? If you are using the sketch pens, then again एक स्केच बनेगा. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद इट फिर एक और स्केच बनेगा. एंड कोई गिनती नहीं है उन स्केचेस की. जितने स्केचेस बनेंगे इट डजेंट मीन दैट यू आर फेलिंग. इट मीन्स यू आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस. बिकॉज डिज़ाइन प्रोसेस इज लाइक सिंथेसाइजिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इट्स नॉट, एज आई ऑलवेज से, इट इज़ नथिंग जो कि एक मिनट में बन जाएगा. It takes time. It takes a lot of energy and patience. Do it patiently.
So once you have resolved that composition in the very perfect way with your complete satisfaction, then you can paste those bubbles जो overlap करेंगे. For example, a lobby takes you to all the spaces. So that means your lobby area should be, it should touch the bubble of bedrooms also, kitchens also, and of course the entrance foyer also will be engaged or touched with the lobby area. Once you are done with your bubble diagram, now comes the concept thing, because it is somewhere in your mind that this is going to be my concept. So now you have to exercise on how your plan, which is the bubble diagram plan, has to engage with the concept, right? That may be in the form of plan or in the form of 3D. You may start thinking about the visual or the view quality of your project at that stage itself. इसके बाद बात आएगी सिंगल लाइन प्लानिंग की. जब आप सिंगल लाइन प्लानिंग यूज करोगे, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी ज्योमेट्री कैसी है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी और साइट प्लान के हिसाब से भी. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन द सिंगल लाइन प्लान in which you will you have to leave those bubbles. You have to now work in, maybe if you are going for a linear pattern or a circular pattern or something elliptical or something alignment or some kind of angular things. So now you have to work on that. You have to start putting on your furniture items, fixtures, your fenestrations also, and all that stuff. Resolve your single line plan to the fullest, and now is the time that you put all that stuff, that single line planning, into your site. अब site में location करना means site में orient करना. What is the importance of putting this thing into the site? उससे you will be guided कि best direction कौन सी है मेरे इस particular plan को इस particular site में रखने की. Never, or I should say that it is not always that आप साइट की ओरिएंटेशन के हिसाब से ही प्लान रखो. इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी. अगर आप चाहो, अगर आपका जो साइट है वो रेक्टेंगल है और आपका जो प्लान है वो भी रेक्टेंगल है, इट डजंट मीन कि आप उस रेक्टेंगल के अंदर बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में ही रेक्टेंगल रखिए. नो, यू हैव द लिबर्टी. थिंक अबाउट द बेस्ट एस्पेक्ट्स, जिसमें आपको सनलाइट बेस्ट मिले, जिसमें आपका वास्तु अच्छे से रिजॉल्व हो जाए, जिसमें आपको साइट में एक्सेस करने की पूरी लिबर्टी और पूरा इफेक्टिव एंट्री मिले. फोर्थ, आपके साइट के सारे फीचर्स क्लैरिटी से और बहुत ही नीटली उसमें ओरिएंट हो जाए. एंड द फिफ्थ वन, आपका जो बिल्डिंग का व्यू है वो बाहर से या जो अर्बन लेवल पे अच्छे से दिखाई दे. तो ये 5 एस्पेक्ट्स आपके तभी पूरे होंगे जब आप अपनी बिल्डिंग को अच्छे से ओरिएंट करोगे साइट में. सो वंस यू आर डन विद इट, यू आर हैप्पी विद द ओरिएंटेशन, देन you can start working on the double line planning. Now double line planning is the, I guess, the best or the main thing जिसमें detailing आएगी. उसके बाद you have to think about, बिकॉज आपने माइक्रो से स्टार्ट करके मैक्रो पे गए, जब डबल लाइन का आप करने लगेंगे तो आप मैक्रो से फिर से माइक्रो लेवल पे आएंगे और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर पर्टिकुलर रेजिडेंस और द प्रोजेक्ट विल बी सॉर्टेड आउट नाइसली एंड इन ऑल द डिटेल्स. नाउ in that particular detailing, you will be very nicely adding the fenestrations, fixtures, the landscape features, the sunshades or the chhajjas, and all other details, whether they are steps or the entry foyer or the entrance chhajja, etc. Once you have resolved it, you must be thinking that कुछ changes अभी भी हैं, because I am telling you design is a process जो एंड तक चलता रहेगा. तो देयर मे बी सम काइंड ऑफ फीचर्स जो आपको मैक्रो लेवल से फिर से माइक्रो लेवल पे जाकर चेंज करने पड़े. तो दैट इज नॉट एन इशू. इट इज़ अ वेरी नेचुरल एंड अ वेरी कॉमन process. So do that, but make sure that the best has to be achieved. Don't do it just for the sake of doing it. Do it for the sake of doing the best. Okay, so now your double line plan has been resolved. You have put your site
you have put your plan in your site properly. Work out the landscape features now. Work out the site plan now. How to do it? You have the road, you have the plan. You have to make a good connection between your site and your plan. For that, you need to give a good access gate, then some kind of a walkway or a driveway till your main entry of the residence. So resolve all kinds of features, whether they are pavements, they are fountains, they are trees, they are the softscape or the hardscape in your site. One thing I want to add here and specially quote that don't be lenient about Vastu, right? Be very specific and be very alert that आपका वास्तु भी साथ साथ sort out होता रहे. Otherwise, your plan will be like a platter which is looking very yummy and बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत टेस्टी है, but उसका न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है. मेक श्योर वास्तु भी उसमें पूरी तरह से सॉर्टेड आउट हो, तभी आपका जो प्लेटर है वो हेल्दी भी है, डिलीशियस भी है और प्रेजेंटेबल भी है. सो योर प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब उसमें वास्तु भी कंप्लीटली सॉर्टेड आउट हो. नाउ वंस यू आर डन विद ऑल दैट स्टफ, यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट थिंग. आपका व्यू नजर आने वाला है. आपको अब काम करना है अपने एलिवेशंस पे, अपने 3D पे. स्टार्ट गिविंग द मॉडल लुक टू द प्लान. Whether you are doing some kind of a hypothetical thing or you are working in a blocking thing, you can simply extrude your plan. And if you have some kind of a very fascinating idea, then also you have to work out the elevations now. While working out the elevations, make sure that you give proper windows, proper doors, proper chhajjas. You get a good sunlight from everywhere. If it is a north direction, you may choose some particular areas which do not require much daylight. So be very alert in that. Then think about the 3D also साथ साथ, so that the blocking के साथ साथ जितना भी आपका 3D वाला जो भी एस्पेक्ट है आपके प्रोजेक्ट का वो भी सॉर्ट आउट होता रहे. देन कम्स द फिनिशिंग थिंग. फिनिशिंग थिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द लास्ट लेयर ऑन द फसाड. जितना भी आपका मत्था है बिल्डिंग का, उसके 4 साइड्स, उस पे क्या मटेरियल लगने वाला है. थिंक वाइसली अबाउट इट, वेदर इट इज stone, whether it is tile, whether it is some kind of a jali, PVC jali or JRC jali, whatever jali it is. Be very wise in choosing the material so that you can have a good view. Also, you have a good maintenance with it. If you are going for HPL, just make sure that the base should be very strong, as well as the riveting and all that stuff is done neatly. So I think in a very less time I have told you about the design process. If you work out your design in this manner, I think you will be able to give a hit show. So friends, I think you will follow the steps and you will create good designs. So I think you like the video. So keep liking, sharing and subscribing. The Pearl Innovations. Thank you.